Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 5. In the previous lecture, lecture number 4, we have studied the linear data structure. This was called the stake. We have seen the algorithms, how to create the stake, how to insert the element in the stake, how to delete the element from the stake, and how to access the values from the stake. We have also seen the implementation of the stake. Dear students, I told you in the previous lecture that coding is not the part of this course, but this is my responsibility to show you how the algorithm works and how we implement those algorithms in any programming language. So data structure in book, actually we have to study the algorithm, we have to study the technique, how to solve the problem. And coding, later on you can implement these algorithms in any programming language. So we have seen the coding of the arrays, we have seen the coding of the stakes. Now today we are going to start a very important data structure, a linear data structure, which is called the queue. So what is queue? Basically, stake was the first in, last out, or we can also define the stake, the last in, first out. Queue is the reverse of the stake. Queue, first in, first out, last in, last out. Did you get my point? First in, first out, last in, last out. The element inserted at the beginning will be removed first from the array, and the element inserted in the last will be removed in the last. This is called the queue data structure. So a queue is a linear list of elements in which the insertion takes place at one end. We do the insertion from one side. That side is called the rear side. And the deletion takes place at the other end, and we do the deletion from the other side. That is called the front side. As compared to the stake, insertion and deletion, both of them, they take place at the one end. Unja yak taraf بود ali inja دو طرف آمد. Insertion as yak taraf mesha, deletion as digar taraf mesha. So that's why this is called first in, first out, last in, last out. As we can see that, look at the line, the person come first will be processed first. Same as for this one, the person who arrived first will enter into the bus first in the queue of the particular cars manufactured in the company. So the deletion side is known as front side and the insertion side is known as the rear. Look at here. From this side, I have inserted the first value, which is 10. And then from this side, I have insertion the next value. This is called 20 and then 30. The next value will come here. Here it will come here. The for example, 40 is the next value. So 40 will come to this particular location. So insertion side, we call it rear. And deletion side, we call it the front. Now 10 here inserted first, so it will be deleted first. Now front point the first element to be deleted. Rear points the last element to be inserted. Badazi kudam value insert mesha. For example, chel agar insert mesha, rear pointer ama increment me kunam me aram ira the location charum unje value digara insert me kunam. Did you get my point? Front aval idhara delete me guna chuke da avala mada bad basda chira delete me guna bista delete me guna bad sira delete me guna and so on. The term front and rear are used in describing the linear list only when it is implemented as a queue. So queue may be represented as a one-way linked list or linear array. Metane ki as linked list ira implement kunin aw metane ki azrui array mira. So I will go toward the array. Consider a linear array queue in two pointers, front and rear. Ma peshta number goftum. Rear barma insertion me kuna, front barma deletion me kuna. Front chikar me kuna value ki aval insert shoda chura ki amu aval delete me cha amura point me kuna front.
वक्त की वो वैल्यू डिलीट मेशा बाद सेकंड वैल्यू रा पॉइंट में कोना बाद के नेक्स्ट सेकंड वैल्यू डिलीट मेशा बाद थर्ड वैल्यू रा पॉइंट में कोना rear point the location of the rear element rear barma chikar में कोना rear barma insertion में कोना so barma चितो मालूम मेशा के आया q मा केस empties या नेस्ट when front is equal to rear वक्त के front हम एक लोकेशन पॉइंट में कोना rear हम एक लोकेशन मतलब बजियस के फ्रंट नल पॉइंट में कोना हिच चीज फ्रंट और रियल एक वैल्यू दारा नल मिसाल अगर नल दारा उची मेशा that time the q is equal to empty frontum nullus rearum frontum is cheese a point में कोना rearum is cheese a point में कोना if array q has an element then ची मेशा वक्त के element insert मेशा मा पेशतर नंबर गुफ्ता बुदम सही कुनिन ببین आली लोकेशन से वैल्यू इंसर्ट शुदा आली में खाइम के दिगर वैल्यू इंसर्ट कुना वक्त की दिगर वैल्यू इंसर्ट में कुना रियर ची मेशा अवल इंक्रीमेंट मेशा बाद नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट मेशा वक्त वैल्यू इंसर्ट मेशा रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 वक्त की वैल्यू डिलीट मेशा नॉवल फर्स्ट वैल्यू रे डिलीट में कुना बाद दुयो नो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 so वक्त की एलिमेंट इंसर्ट मेशा मा पेशतर बर गुफ्तम ची मेशा रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 वक्त की एलिमेंट डिलीट मेशा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 हां हर ची कदर के साइज एरेस फॉर एग्जांपल मा साइज अजी 5 मानम वक्त के 5 वैल्यू इंसर्ट मेशा वो क्यू ची मेशा पुर मेशा वक्त की रियर पॉइंटर ची बरसा द आखिर लोकेशन बरसा मतलब अजी चीज के क्यू पुर शुदा ओके क्यू इंसर्ट एल्गोरिथम अ वेरी इजी एल्गोरिथम just like a stake it's so easy how we will do this one look at here please this algorithm is used to insert the item or element into the queue awal ma mi binam ke aya front या rear ये मतलब values अजी पुर खुना शुदा मिसाल वा बरतुमा मेतम इन 12 इन 16 19 21 ما इरा पुर कर देम हा साइज अजी एरे चंदस साइज अजी एरे 4 4 एलिमेंट में तना के इंसर्ट स्टोर कुना सही शुद अवल कुदाम वैल्यू इंसर्ट शुदा 12 बाद कुदाम वैल्यू इंसर्ट शुदा 16 बाद कुदाम वैल्यू 19 बाद कुदाम वैल्यू 21 फ्रंट लोकेशन अवल पॉइंट में कुना और रियर आखिर लोकेशन एन लोकेशन एन पॉइंट में कुना डिड यू गेट माय पॉइंट यस सो व्हाट इज दिस सिनेरियो इट मीन ओवरफ्लो ची मतलब बस के रियर आखिर लोकेशन रसीदा दिगर जाय मान दारम बिबिन if rear is equal to n the e सूरत के बिबिन e सूरत आली rear the आखिर लोकेशन रसीदा माची मेगम overflow exit quit everything यबका को इशू दा सही शुद दिगर सिनेरियो राले मा मेगम के दिगर सिनेरियो चितो मिशा let me go through this one yeah and also here this one so set the rear pointer ali q psycho barma q cheers q bikhi khalias each is frontum cheese point na me kuna rearum cheese point na me kuna machi me kunam rear is equal to rear plus 1 rear ma me aram the location awal and insert the item har jay ki rear q of rear mean har jay ki rear point me kuna the q unje chi ko value re insert ko let's say mind je value ra metam sesta 13 is my first value सही शुद्ध बाद हम चाहिए बाद में दिगर वैल्यू रे इंसर्ट में कोनम rear is equal to rear plus 1 rear में इंक्रीमेंट कर दम सही शुद्ध माइन जमे आराम सेकंड वैल्यू रे इंसर्ट में कोनम 19 सही शुद्ध and same thing the process will be continue until के rear आखिर लोकेशन रसा so at this point this one rear pointer इंक्रीमेंट को वैल्यू रे इंसर्ट को rear pointer इंक्रीमेंट को वैल्यू इंसर्ट को हाँ if front is 0 then set front is equal to 1 front is equal to 0 पेशतर आले front pointer अमामी आरम सही शुद्ध front pointer अमाले में आरम के चिकिसमी इमेशा बिबिन rear चंद वैल्यू रे इंसर्ट करता ये लम्हा में एक दिगर वैल्यू रे इंसर्ट नहीं कुना
19 شدم من میگم که به 45 این rear the e location آمده rear the location صحیح آمده خب اله فرنت ای سی ویلیو رو ما انسرت کردم اله فرنت کدام ویلیو را پوینت کنم ما پیشتر بار گفتم what is q first in first out first ویلیو کدام انسرت شده 13 از این طرف نو فرنت ما اله خو فرنت چیزی پوینت نمیکنه نو اله ما فرنت د کدام لوکیشن میارم فرنت the location اول میارم تو front is equal to location number 1 this is how it so اول says the delete میشه بعد front increment میشه بعد نوزده بعد 45 کا آسان بود it's so easy okay let's go for the other one the deletion algorithm that how this particular deletion will work so this is very easy like same as this one we will go toward the deletion here q deleter. Let me bring it here. We will use the same pointers. This one. Yes. Let me bring the front end here also. Front end. Yeah. There is my front end here. اول کدام سیناریو است اول باش که این سیناریو رو جور کنیم که خوب بفهمین که ویلیو چطور دیلیت میشه صحیح شد क्योंकि चूरा के क्यू इम्तियाज बिखी नो ची कार में गुना कि ना खो फ्रंट चीज़ पॉइंट में गुना न रियर चीज़ पॉइंट में गुना हाँ चितो वर्मा मालूम में शा क्यू इम्ती बरू वक्त सूरत मालूम में शा कि फ्रंटम नला पॉइंट गुना आओ रियरम नला पॉइंट गुना ये चीज़ इंसर्ट ना फ्रंट चीज़ पॉइंट में गुना आले ना रियर चीज़ पॉइंट में गुना so the queue is empty so we write down under flow अवल कुदा वैल्यू रे इंसर्ट को बाद उरा डिलीट को सही शुद्ध खो अगर आले इस सूरत में कि पेशतर सूरत के बूत कि अगर माँ मिसाल अगर माँ वैल्यूज दारम वैल्यूज इतोरी दारम कि माँ एक से दाना वैल्यू इंसर्ट कर दबूजम माँ मेगम से इस दबूत 19 चलो 5 से वैल्यू माँ बूत सही शुद्ध फ्रंट लोकेशन वाला पॉइंट में करना आले चीके समय में शा कि delete the item so delete the item is equal to q of front har chahe ki the q front point mein ko na aur chi ko delete ko nira ma delete kar dam sahi shod delete kar dam nu chi kar ko ha bi minale do surat as agar front is equal to rear as agar front masawi real boot ko ye matlab chi boot ki yak element dash ni तो आले बात फ्रंटम नला पॉइंट में को ना रियर हम ना चूड़ा अगर एक वैल्यू दारा मिसाल अगर इंजा एक वैल्यू बूत एक वैल्यू हदफ अजीज के फ्रंटम باش ما برشما هنا تشريح ونمسي سايكو اي صورت مثال اي صورت ببین आले फ्रंटम एक वैल्यू क्यू एक एलिमेंट दारा फ्रंटम मेरा पॉइंट में कोना रियर मेरा पॉइंट में कोना सही शुद्ध अगर एक वैल्यू में दाश्तीन वक्त की डिलीट कर दें नो आले सेट फ्रंट इज नल एंड रियर इज नल फ्रंटम नल को और रियरम नल को डिड यू गेट माय पॉइंट yes for example अगर already values में दाश्तीन rear location सेरा point में कुना front location वाला अगर मा इरा delete कुनम आले says दारा सही शुद्ध says दारा माची कदम delete कदम वक्त कि I delete this value no आले माची में कुनम कुदाम value next delete में शा front is equal to front plus 1 front is equal to front plus 1 front yet increment measure yeah this is the algorithm for insertion and deletion so let me show you I already code this particular algorithm in programming language let me show you in the particular code blocker that how it works this is my code I have 3 functions like a stake insert the value delete the value and display the value सही शुद्ध माइन जाए साइज गिरफ्तम फॉर एग्जांपल मैं गुफ्तम कि मैक्सिमम 10 वैल्यू रेस्टोर करना q of 10
front initial value چی است -1 دی روز ما برات گفته بودم در پیشتر لکچر که چی بود چرا ما -1 چرا که اره از صفر شروع میشه پیش از صفر چی میاد -1 میاد دی خاطر ما मतलब ای فرنتم چیز پوینت نمیکنه نل است او ریرم اینیشیلی چیز پوینت نمیکنه نل است امو چیز است وقتی که کنډیشن true است while کنډیشن اینجا استفاده کردم while one mean true while وقتی کنډیشن true است چیکو insertion 1 for insertion 2 for deletion 3 for display 4 for the exit the program enter your choice या एक प्रेस को या 2 या 3 या 4 हाँ see in choice switch choice अगर यूजर 1 प्रेस करता 1 को चीको insertion को enter the value to insert see in value and call the function insertion function and मुझे एक value रवान को अमु value के insert कर दी ई बर्शमा value insert में ई function कॉल को दोयम अगर delete the value हो कुदाम function कॉल को delete function कॉल को सयम display को display आसान है 4 exit 0 mean terminate everything terminate the program default चीज wrong selection ना एक प्रेस कर दी माँ चिरो गौतम ता 4 सिनारियो दारे ता अगर 5 प्रेस में कुन या दिगर वैल्यू कबूल न में कुन हाँ विभिन्न आले implement में कुनम insertion queue if rear is equal to size -1 माँ मेगा मावल overflow न बिबिनम पेशतर मिसाल माँ बैठ वाला गौतम दा size अजी दास्त नो अस्सेफर ता नो ना अगर rear the location न हम रसीदा नो ची में गना queue is full insertion is not possible first delete the value then you can insert the value yes ha agar front चीज point ना में को ना front नलस no front दा कुजा बियारिन the location अवल बियारिन और rear हम द चिको rear हम एक increment को हर जगह की rear point में को ना उरे चिको value रे insert को and insertion success ha deletion भी बिन if front is rear अगर front और rear एक element point में कुना मतलब the area q चीज एक element मादारा माली इंजा पेशतर की माँ बरत गुफ्तम सही शुद्ध वक्त की एक element दारम the q is empty deletion is not possible वक्त की value रे delete कर दम so sorry if front is equal to rear if front is equal to rear अगर front और rear एक value रे मसावी मतलब बिखी नलस अर्दूता value मसावी है नो चीकार को q is empty deletion is not possible हिच value न दारे चुरा की अर्दूता null point में करा सही शुद्ध अगर value front मसावी rear नेस नो चीकार को value रची को value रे delete को और front increment को बाद जो कि गोदाम value insert शुदा अमूरा delete में कुना अगर इन जमाले गुफ्तम अगर front is equal to rear अमी सूरत आले हमारा नो वक्त के एलिमेंट एक एलिमेंट में दाश आलिची में को ना फ्रंटम नल सेट को और रियरम नल सेट को यस डिस्प्ले फंक्शन वैल्यू रा इफ rear is equal to -1 अगर भागबे के मगर एक एलिमेंट ना दारा हो कुजा वैल्यू रा इंसर्ट बर्शमा डिस्प्ले को ना q is empty else for loop beginning as front शुरू को ता rear बोरो as location अवला बोरो ता location आखिर कुलिश वैल्यू रची को सी आउट को बिबिन e male megam e code this coding is not the part of the course coding is just for your understanding that we are going to study the algorithm what is the purpose of this algorithm فاهمين the course جماعتنا algorithm is yes ما باي خاطر برميكم कि बफामिन कि किसमी implement में the programming language let me share the output file for this one. Yeah, this one is the output. 1 for insertion, amuraka must 2 for deletion, 3 for display, 4. I want to insert the value 1. Enter the value to insert just to have value nama insert kartam. So you should digar first digar value nama me khaim ke insert kunam ashtadu nura ma insert kartam. Ale me khaim ki chikunam ira chikunam display kunam 3 for display. So 3 for just to have our insert shuda bad ashtadu no. This is how it works. Same as you can also enter your choice ma charam me janam ki exit me kunam yes exit program. So this was how it works. What is the favorite dish of the aliens? Hiroshima khub me famin space chips. Yes, halka se me khora. Circular array. Even a simple queue के as एक disadvantage दारा. Simple queue has a disadvantage.
when the rear point reach to the end of the queue, no more element to be added to the queue, even if the beginning memory location of the array is empty. To overcome the above disadvantage, 3 different types of the queue is applied: circular queue, double-ended queue, and priority queue. ما एक मिसाल में तुम براتين جبين front size पुरुष हो दिंजा front एक value रा delete कर दा आली location तो ये मा C delete में कोना बाद D रा बाद E रा सही शुद्ध C रा मा आली delete में कोना for example मा C रा delete कर दा सही शुद्ध हाँ front आली किरा point में कोना location D रा ये D sorry third location ببین علی ما میخوام که دیگر ویلیو اینسرت چرا که ریر خود آخر رسیده دیگر جای ما ندارم ها پیش از این 2 دانه ویلیو کو دیلیت شده اونجا خود جای خالی شده باید که این دو مموری را ما استفاده کنم اینا ما چه قسمی استفاده میکنم که ما لاست سل لینک کنم کتی اول سل لوکیشن آخر ما لینک کنم کتی لوکیشن آخر سرکولر جوړ کنم و این memory wastage problem بود the simple queue ایره ما چی کسمی حل میکنم ایره ما از روی circular queue حل میکنم. Did you get my point? Yes. بعد از این rear the location آخر رسیده بعد از این کجا چرخک میزنه چرخک میاره در location اول بعد rear کجا میاره بعد از این که let's say ما دیگر value insert میکنم I want to insert the new value. So how will go me charhak me jana the location awal in jama chigar value insert me kunam let's say for this one is the v. Did you get my point? Yes ali ek value la bad next value ki ma insert me kunam e chimika in jama the e location me in jama next value ra insert kunam awal d delete me shab bad im charhak ituri me jana value ram delete me kunam memory ram istifada me kunam. This is called a circular queue. मतलब बदी चीज़ शुदा वक्त की rear last location मेरा सा ई पस चरखक में आ रहा the location अवल इतुरी में शही. Did you get my point? Yes, it's a very simple one. चिकिसमी खूब logicus. To make the queue circular, queue of ones comes after queue of n. The आखिर location के रसीदिन location पंजम के रसीदिन बाद अजीची में शा location अवल शुरू में शा अवल location the आखिर में merge कदम. So instead of rear is equal to rear plus 1 we reset rear is equal to 1 बाद अजी को location आखिर रसीदिन n location n रसीदिन when rear is equal to n we make it rear is equal to 1 बाद माने में गम कि rear is equal to वक्त की rear is equal to rear plus 1 माई वक्त न में गम आखिर location के शुमार रसीदिन if rear is equal to n location पंजम रसीदिन आले memory खालियस value delete शुदा बुत मैं कुनम set rear is equal to 1 ना के rear is equal to rear plus 1 वक्त की rear is equal to 1 हमारी आले मा में गम rear is equal to rear plus 1 rear is equal to rear plus 1. Did you get my point? Yes. To make the queue circular, if front is n then the queue is deleted from front is equal to 1 instead of front is equal to 1 समी वारे वक्त की आखिरी वैल्यू डिलीट शुदा फ्रंट टर्म दाखिल रसीदा फ्रंट टर्म में आए द लोकेशन अवल फ्रंट सेट फ्रंट इज इक्वल टू 1 सही शुद्ध ना के फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 हाँ वक्त की अवल रसीदा फ्रंट चरखक ज़दा बाद मा बेगम फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 एक तुरी चरखक में जना वक्त की रियर आखिर लोकेशन रसीदा मा बेगम रियर इज इक्वल टू 1 इरम बाद अजी कुदाम लोकेशन शुरू को अवल लोकेशन शुरू को चुरा के मर्जस सर्कुलरस और वक्त की लोकेशन अवल रसीदा बाद मा बेगम रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1. A circular queue is like a wheel or perfect ring mistake circle as peshima. However, the logical elements are appear in the circular fashion. बर्मा ची किस्मी मालूम में शा बर्मा हो इधर इस सूरत मालूम में शा एक सर्कुलर मालूम में शा मगर रियलिटी हो इतुरियस ना लास्ट लोकेशन हम चरखक में जनावल मेमोरी हो ई किस्म स्टोर में शा step by step. हाँ, let's go for the algorithms. Circular queue insert and circular queue delete. This is same like the previous one but with little change. माची में गम अवल ची कारम चेक में गम queue inserters पुर खुनशुदा पुर ची किस्मी बर्मा बाशा ची किस्मी बर्मा मालूम में शा एना की बिया की रबी बिनिन. Let me take the example of this one.
take the values from here, from here, from here, from here, from here, and from here. Control C. So I should bring it to the algorithm. E को circular fashion is here बाला कुनिन की बर्मा सही मालूम शवा. إذا ما تبان بيكون إذا شو ما فاهمين. बाज की निर्माण ये चीज़ आरब जो कुन front. E front should say should बाज की निर्माण को लिंक सेट कुन F. जी किसमी बर्मा मालूम शवा कि Q circular Q matches full as. सही को इंजन खेल आसान है. एक तक कि शुमा एक दिगर चीज़ हम बफामिन एक चीज़ दिगर मां में खम इरम बफामिन वो ये इसके लोकेशन अवलस बाद از लोकेशन अवल ची में लोकेशन दो युमस बाद از लोकेशन दो सयुम टोटल 4 सेल मादारम सही शुद माची चाहे पता लोकेशन सयुम शुद लोकेशन 4 यस खो आले मुतावजी शबी खूब में फामिन इंजल 4 mean 4 is equal to n the last values total size changes 4 सही शुद okay ما بقول front is 1 rear is 1 rear is n front location अवला point में कुना rear location आखिर location 4 दही सूरत चीज आले दिगर जाय मान दारम stake is the sorry Q is full overflow exit everything सही शुद ओके दिगर गया अगर इस सूरत एक किस्म بود इस सूरत में میگم इस सूरत ببین आले هنا مكمل چیز ای خالی است مكمل چیز خالی است مكمل خالی است front چیرا point में कुना null point में कुना front is equal to what front is equal to null और इंजा rear चीरا point में कुना rear is equal to what a null rear am null as front am चूरा की q चीज empty is no चिकार को if front is null and rear is null nuchikar ko front is 1 or rear is 1 no the frontum chico the location aval bearin frontum the location aval bearin or rearum the location chura ki bikhi khali budni yes frontum avalamat and rearum avalamat or inja ma value insert me kunam let's say d the first value insert should say should no set front is 1 or real is 1 else if agar surat ek kismi بود se char value ra shuma insert kar da budin misal ma megam inja emi location d बाद as d shuma chira insert kar din d e n f ami ke samas no else if e f और एक दिगर value रा insert को G सही शुद्ध हाँ इस सूरत शुद्ध आओ मिसाल माँ डीरा चिकदम डीरा माँ डिलीटम कर दबुदम आओ फ्रंट चिका फ्रंट इंजर पॉइंट में कोना इस सूरत बुत else if rear is n and rear अगर rear दा ई लोकेशन बसीदा आले चिकार को بعد از اینکه ولیو اینسرت میشه چرخک میزنه د لوکیشن اول می آیا ایده کدام لوکیشن آمده آلی ای دالی د لوکیشن اول آمد و اینجا ما ولیو را اینسرت میکنم اچ did you get my point else if اگر ریا داخل لوکیشن رسیده بود خب اینجا ما ولیو را اینسرت میکنم یا
अगर ई सूरत में بود सूरत ई किस्मी بود कि how we will go for this one अगर ई किस्म वैल्यू را دارم EFG सूरत नॉर्मल के است rear اینجاست و چی کار کو rear is equal to rear plus 1 بعد از این چی میشه صورت سوم rear چی کو rear یکیش increment کو rear is equal to rear plus 1 او value را چی کو اینجا insert کو h اینجا insert کو امی سه قسم صورت است once again اول ببین پر خونه شده فرانت لوکیشن اول پوینت میکنه ریر اخیر لوکیشن خود جای ندارم پر است خب اگر بیخی کیو امتی بود فرانتم لوکیشن اول سیت کو ریرم انسرت کو سیت کو اور ویلیو را انسرت کو صحیح شد خب else if یا اگر ریر داخل لوکیشن رسیده بود جای بود بیشتر پیش ازی که لوکیشن اس خالی بود و ریر چرخک بته और ची कार को अमीरा वैल्यू इंसर्ट को या अगर नॉर्मल सिचुएशन is rear is equal to rear plus 1 को वैल्यू रे इंसर्ट होगी बोरो so that is how to go for the circular queue insert. Did you get my point? Yes. Now the same scenario we will use it for what we will use it for the particular queue of deletion, the queue for deletion. Now let's go for the circular queue delete. How we will delete the values from here. Same is like this one. اول چی کار میکنم اول خو ایر میبینیم آیا که front here this one the front and rear علی ما بینم چی تو بر ما معلوم شوه که کیو بیخی ویلیو نداره هیچ چیز اگر فرانت هم نلس او ریر هم نلس حتما صورت است که کیو چی است empty است خب دیگر چی میکار میکنن delete the value delete چیزی میکی ای خو نورمال صورت است صحیح کو front is equal to front plus 1 front is equal اول e را delete کو بعد f را delete کو بعد g را delete کو امی رقم value را delete شدگی برو خب ها ای خو نورمال سیچویشن است front is equal to front plus 1 دیگر صورت است که اگر شما یک value را دارین دیگر ویلیو ندارین صحیح شد یک ویلیو را دارین فرانتم front is equal to rear frontम लोकेशन 1 पॉइंट में कुना या rearम लोकेशन 1 पॉइंट में कुना आम्ही एक वैल्यू रमा डिलीट में कुना आले front ची पॉइंट में कुना so rear is equal to what rear is equal to null and front is also equal to null front is equal to null and then next time front rear is equal to null and front is also null अर्धू तो null पॉइंट चुरे एक वैल्यू बुद मार डिलीट कर दें सही शुद्ध okay no दिगर ची कैसे में मेशा how to go for this one okay yeah if front is n front is n misal ma بگویم تا اینجا वैल्यू रे इंसर्ट को मेगा के अगर फ्रंट लास्ट लोकेशन ऑफ पॉइंट को ना एंड चुरा एक बार चरखा ज़दा अवल इंजा ई بود ای را دی بود دی دیلیت شد بعد ای دیلیت شد اف جی بعد از جی ما اچ انسرت کردم یک بار چرخک زده आले फ्रंट ई पॉइंट में गुना अगर फ्रंट वक्त की आखिर लोकेशन रसीदा नो चिकार को फ्रंटम द लोकेशन ई वक्त की ई वैल्यू डिलीट शवा फ्रंट चिको द rear as taraf rear bearing this is how it work for the circular queue. Dear students, kindly study the lecture, work on the algorithms. If you have the problem, you can also check it on the internet. There are many videos available on the YouTube, many concepts available on the Google that can clarify the concepts of the particular this queue. Dear students, one thing more in the last is this is online lectures. You never experienced the online lecture before. So definitely you will face the particular difficulty in understanding the course. So how you will clarify the concepts, study my lecture also, and also search for your own, go to the YouTube,
There are multiple videos available over there. Go to the Google. There are many websites which are clarifying the concepts of the data structure. You can also take the help from there. If you have any question, please feel free to ask the question. Allah Hafiz.